Once again, India was compelled to exercise its rights to pound rogue terror outfits operating from across the borders, disturbing peace and prosperity time and again. In a powerful message to those who threaten peace, the Indian Armed Forces launched precision strikes at 9 locations, targeting terror infrastructure across the border. This comes in the wake of the barbaric Pahalgam terror attack where 25 Indians and 1 Nepali citizen were martyred. Just hours after Operation Sindoor was initiated, Prime Minister Narendra Modi convened a high-level meeting with the Union Cabinet. The entire cabinet stood united in support of the armed forces and hailed the strike. Prime Minister Modi also briefed President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan on the overnight developments. Defence Minister Rajnath Singh called the operation a demonstration of India's sovereign right and praised the armed forces for their precision, alertness and sensitivity. भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। As the operation unfolded, Union Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting with Chief Ministers, DGPs and Chief Secretaries of border states. Leaders across the political spectrum voiced strong support. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar urged the global community to adopt zero tolerance for terrorism. हमारे दुश्मन देशों को संदेश ले लेना चाहिए कि हम लोगों को उनके चप्पे चप्पे की खबर है, एक एक ठिकाने की खबर है और आगे ऐसे और एक्शन लेना होगा तो हम लोग उतनी ही मजबूती से। The opposition also put politics aside. The Congress party and its leader Rahul Gandhi extended full support to the government and armed forces. MP Asauddin Owaisi also welcomed the decisive action under Operation Sindoor. From grief to justice, families of the Pahalgam victims expressed relief and pride after the strikes. Many call the operation absolutely necessary to deliver a strong message against terrorism. बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। मोदी साहब ने बदला लिया है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो। Across cities, towns and villages, citizens stood united. From Delhi to Dibrugarh, slogans of Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram echoed through the streets. India saluted its brave soldiers and celebrated their firm stand against terror. पहलगाम का जो बदला लिया है, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री का। अभी तो कुछ भी नहीं जवाब दिया, हम तो चाहते हैं कि इतना मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि दुश्मन हमेशा के लिए याद रखे। 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को मुंह तोड़ का जवाब दिया गया है भारतीय सेना ने और पाकिस्तान को अभी अकल आनी चाहिए। But even as the dust settled, Pakistan resorted to provocation, violating the ceasefire with artillery fire in Jammu and Kashmir's Bhimber Gully. The Indian Army responded with equal resolve, underscoring that every threat will be met with strength. Operation Sindoor is not just a military operation, it's a message that India will not stay silent in the face of terror. A message of unity, resilience and unwavering resolve.